Hello everybody. Today we will discuss about the case study based questions. The first chapter which I am taking, that is the polynomial. Polynomial say we are taking case study based questions we are going to discuss. So first question is there. See now, due to heavy stone an electric wire got bent as shown in the figure. This is the figure is there only. ये figure दिया हुआ है. Due to heavy stone electric wire bend हो जाता है. In this shape is there. If followed a mathematical shape, answer the following questions. In this shape is there only. Means in the shape of this curve is going to bend. So you are supposed to give the answer of these questions. देखिए, these questions are totally based on this figure only. इस figure पर ही based ये सभी questions हैं. Read this figure only carefully and then give the answer of these questions. First है हमारा name the shape in which the wire is bent. वायर जो बेंड हुआ है वो किस शेप में बेंड हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन स्पाइरल, पैराबोलिक, इलिप्टिकल एंड लीनियर. सो द आंसर इज द पैराबोलिक. पैराबोलिक शेप क्या होता है? दिस इज योर पैराबोलिक. स्पाइरल करेंगे तो ये स्पाइरल है, लाइकवाइज दिस इज द स्पाइरल. इलिप्टिकल करते हैं तो शेप हमारा ये होता है, दिस इज. एंड लीनियर मींस इज ऑलरेडी यू नो दैट इज द स्ट्रेट लाइन इज देयर ओनली. सो शेप इज इन दिस वन, इसमें है, सो दैट इज द पैराबोलिक इज देयर. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. Second is how many zeros are there for the polynomial. इस polynomial की how many zeros are there? See now, ये figure, this curve is going to intersect the x-axis at 2 points. ये कितने point पर intersect कर रहा है? 2 point पर. x-axis को 2 point पर intersect कर रहा है. तो इसकी zeros कितनी होंगी? Represented the shape of the wire is answer is A 2. Because ये कितनी जगह पर कट करता है at the x-axis, that gives the zeros of the polynomial. Geometrical meaning में अगर मान लीजिए फॉर इंस्टेंस ऐसे होता है x-axis and this the curve is given like this one, so it is going to intersect at 4 points. तो इसकी zeros कितनी हो जाएंगी? 4 is there. कि at how many places this curve is going to intersect the x-axis. Third, the zeros of the polynomial represented by this wire. Zeros of the polynomial देखिए, zeros of the polynomial क्या है? एक -1 and 3. कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? एक्स एक्सिस पर. तो दैट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल -1 and 3. सो आंसर विल बी -1 and 3 is there. दिस इज योर आंसर फॉर दिस थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द वायर इज. इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? देखिए, जीरोस हमारे क्या? -1 and 3. इट मींस आपका पॉलिनोमियल क्या रहा होगा? x+1 and another is x-3. क्योंकि x plus 1 is equal to 0 करेंगे, you will get x equal to -1 and x plus -3 is equal to 0, that is x equal to 3 is there. You must do the product of this one, that it will give you the expression is there. तो इसको सॉल्व करिए. देखिए, x² plus x minus 3x minus 3. So you will get x² minus 2x minus 3. So this is your answer. So x² minus 2x minus 3 is your answer. फिफ्थ है द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1. तो इफ यू नो दिस वन, अगर आपको ये पॉलिनोमियल इसका एक्सप्रेशन पता है तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट. जस्ट x इक्वल टू -1 यू मस्ट पुट हियर ओनली. यहां -1 पुट करिए. -2 into -1 -3. सो यू विल गेट 1 plus 2 -3, so that you are getting 0. So answer will be what? None of them. कोई नहीं इसमें, none of these is your answer. So question may be given, figure may be given. देखिए, अगर हम इसका एक्सप्रेशन इन जनरल करते हैं तो px इक्वल क्या होता है? px² plus bx plus c. एंड वी नो कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है तो द माउथ विल ओपन अपवर्ड्स. यू नो दिस कंडीशन. इफ a is greater than 0, the mouth of the curve is always open upwards. अगर a less than 0 है, नेगेटिव है, तो इट्स डाउन ऑनवर्ड्स इज देयर. तो इसका माउथ ऊपर खुल रहा है. इसका मतलब यह है कि वी मस्ट नो कि द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज विल ऑलवेज बी द पॉजिटिव इज देयर. नाउ हैव अ लुक. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन दैट वी आर टेकिंग. सेकंड क्वेश्चन है ए हाईवे अंडरपास इज पैराबोलिक इन शेप्स. हाईवे अंडरपास है मींस पुल के नीचे से हम जा रहे हैं तो उसका फ्रंट होता है, दिस इज पैराबोलिक फॉर्म होता है. दिस इज इन द पैराबोलिक फॉर्म shown in the following figure and we are supposed to give the answer after watching this figure only. इस फिगर को
ये पैराबोलिक फॉर्म में है, जस्ट यू कैन लुक एट हियर नाउ ओनली द शेप ऑफ द क्रॉस स्लोप्स एंड पैराबोलिक camber is here. Yeah, this is in the shape of the parabolic, this one, and we are supposed to give the answer of these questions जो इस पर बेस्ड है. पहला है if the highway overpass represented by, अगर मैं इस हाईवे ओवरपास को इस पैराबोला को if we represented by this one only means by x square minus 2x minus 8, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं x square minus 2x minus 8 से, then its zeros are, तो इसके zeros क्या होंगे, means the value of x which will satisfy this one only. तो देखिए अगर x value 2 you are putting is here only, it's not going to make it 0, so just x equal to this one 4, you are going to put x equal to 4 is here, so 4 16 and then minus 2 is there, x will 4 you are going to put it, 16 is here only, not going to satisfy, just put minus 2 is here, so minus 2 whole square is plus 4 and minus 2 into minus 2 plus 4, so that is plus 8 and minus 8 it is going to, so your answer is the C is there. You have to find out the zeros are there. Zeros क्या है जो इस polynomial को satisfy करेंगे, make it equal to 0. You must put the values and solve it only. Second है the number of zeros of the polynomial representing highway overpass equal to the number of points where the graph of polynomials. तो इसका आंसर होगा intersect x axis. See important point क्या होता है कि अगर if your polynomial is this one, suppose आपका polynomial ये है x square plus bx plus c, तो इसमें हम दो पॉइंट डिस्कस करते हैं, zeros of a polynomial, zeros of a polynomial, and second is geometrical meaning of the zeros of the polynomial. Zeros of polynomial, geometric meaning. Geometric meaning का मतलब होता है कि जो कर्व है which is going to cut the x axis at how many places, कितने प्लेस पे x axis कट करता है, that gives the geometrical zeros of the polynomial. x axis पे कितनी जगह कट कर रहा है, that is there only. इस केस में क्या होता है कि here is the important point is there, let's suppose the curve is going to cut the x axis 3 places, मान लो ये 3 प्लेस पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि then the degree of that polynomial will be the 3 is there. लेकिन इनके सब zeros of the polynomial में किसी भी polynomial की जितनी डिग्री होती है, like the degree is here is the 2, so there will be the 2 value of x की कोई भी दो वैल्यू इसको 0 बनाएंगे. There is a difference in these two. यहाँ पर degree of the polynomial is always equal to the zeros of the polynomial, लेकिन यहाँ पर in case of the geometrical meaning, zeros degree of the polynomial is not always equal to the zeros of the polynomial is there. क्यों, देखिए अगर straight line है, you are going to do the graph straight line which is not going to intersect, जो x axis को intersect ही नहीं कर रही है, तो इसका zeros of the zeros कितना होगा, here is 0 is there because it is not going to cut the x axis there. स्ट्रेट लाइन है, डिग्री 1 है, तो एटलीस्ट इसकी 1, अगर zeros of the polynomial डिस्कस करेंगे तो देयर विल बी एटलीस्ट 1 वैल्यू व्हिच विल मेक इट इक्वल टू 0. लेकिन ये x axis पर नहीं करी तो यहाँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग में 0 0 है, दिस इज देयर, सो इट विल इंटरसेक्ट ऑन x axis देयर. एंड थर्ड इज ग्राफ ऑफ ए polynomial is, graph of this polynomial, this one, or you can say this polynomial, degree 2, so curve will be there in the shape of the parabola will be there, not the shape of the straight line, no circle, no ellipse, only parabola is there. Fourth is the representation of the highway underpass whose 10 is 6, एक 0 6 है and sum of the zeros is 0, one of the 0 is 6, लेकिन sum of the zeros, इसका मतलब डिग्री 2 है तो दोनों का सम 0 दिया है, तो 1 से एक 6 है तो दूसरा 0 क्या होगा, -6 will be there only, plus 6, one of them 0 is 6, so another 0 will be the -6 is there only. Then what will be the polynomial in this one? So देखिए this is B part, x square minus 36, क्योंकि देखिए x square minus 36 is equal to, just make it equal to 0, you will get x square equal to 36, so x is equal to plus minus 6, you will get plus 6 and minus 6 is there, one of the 0 6 है and sum is 0 is 0, that means another will be the -6 is there. Fifth है the number of real zeros that polynomial px equal to this one can have is, see now the number of real zeros that polynomial, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो what you will get, x square plus 4 minus 4x plus 4, so this is your x square minus 4x plus 8, this is your polynomial is there only if you will solve it, so the number of real zeros इसकी क्या होंगी, zeros is there only.
So this is the answer is there. In case of the number of zeros of the this polynomial is there. Now have a look.